students, in the previous lecture of time value of money, we learned the concept of annuity. Annuity क्या था? It was a fixed amount, whether paid or received at fixed periodicity. Today we are going to learn is uneven cash flows. Uneven cash flows मतलब कि when the periodicity or the amount is not fixed. तो ऐसे केस में calculations कैसे करने का? Let's see. Let's say we have an example. The present value of an investment with the following year-end cash flows with a 12% required rate of return is closest to how much? हमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है ये कैश फ्लोस का। एक चीज तो समझ में आता है कि हम पीएमटी फंक्शन नहीं यूज कर पाएंगे। पीएमटी में अगर मैंने -50,000 डाला और एन डाला 5 years, तो कैलकुलेटर क्या समझेगा कि मेरे को -50,000 एवरी ईयर है फॉर 5 years, बट दैट इज नॉट द केस। वी हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ईयर्स, सो वी कैन नॉट यूज पीएमटी फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे? वन ऑप्शन इज वी कैन डिस्काउंट इंडिविजुअल कैश फ्लोज। हाउ? फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द टाइमलाइन। So now we have the timeline with us. We can discount this one for 1 year, this one for 2 years, this one for 3 years, and this one for 5 years, and add all of the values, and this will give you the present value of all these future cash flow. So this is one method we can do. Another method or function that we have on calculator, we can use that to compute present value for these uneven cash flows. So on the calc, you will see this CF button. This you can use to insert uneven cash flows. So CF अगर हम प्रेस करेंगे तो आपको कैल्सी पे दिखेगा CF 0, तो दैट स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो एट टाइम 0। तो हमारा टाइम 0 पे तो कुछ भी नहीं है, सो इक्वल टू 0 एंड देन प्रेस एंटर। सो यू विल सी CF 0 इक्वल टू 0 ऑन योर कैल्सी। हमेशा एंटर प्रेस करना मत भूल जाना, वरना कैल्सी डेटा स्टोर नहीं करेगा। देन डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो C01 आएगा, दैट इज कैश फ्लो एट टाइम 1. So that is -50,000. Then press enter and down arrow. Then you will see is F01. F01 stands for frequency, कि ये 50,000 कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमारे यहाँ पे वो रिपीट नहीं हो रहा है, सारे यूनिक है इसलिए 1। अदरवाइज यहाँ पे you can put number of times that value is repeating, but it has to be in continuous basis. एक -50,000 यहाँ पे है और लेट से एक ईयर 4 पे है, तो हम 2 नहीं डाल सकते। कंटिन्यूसली वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आप नंबर यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो, एंड यू डोंट नीड टू इंसर्ट दैट कैश फ्लो अगेन एंड अगेन। बट सिंस हमारे एग्जाम्पल में सारे ही यूनिक है तो सब फ्रीक्वेंसी 1 ही आएगा। Okay, so you don't have to do anything over here. Just press down arrow key, go to C02, 75,000, enter, down arrow key. Same way सारा डेटा आपको इंसर्ट करना है। C04 में आपको 0 प्रेस करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली कैल्सी विल अलाउ यू टू गो टू C05, वरना उसको लगेगा कि आपका सारा डेटा इनपुट हो गया है एंड इट विल नॉट अलाउ यू टू गो टू नेक्स्ट वन। So you have entered all of the data. Now we want to calculate present value. Present value कैसे calculate करेंगे? Next to cash flow button, you will see one NPV button. NPV stands for net present value. अभी ये नेट क्या है और कैसे यूज करते हैं वो हम कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में सीखेंगे। इट इज सिंपली जो भी आपका कैश फ्लो एट टाइम 0 है वर्सेस आफ्टरवर्ड्स, वो उन दोनों को नेट कर देता है। सो इट इज यूज्ड फॉर क्वेश्चंस लाइक कि मैं आज इतना इन्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर में मुझे इतना मिल रहा है, तो नेट मेरे लिए कितना प्रॉफिट हुआ। सो दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड यूजिंग एनपीवी।
बट फॉर नाउ हम लोग नेट को इग्नोर कर देते हैं एंड वी विल ट्रीट दिस लाइक प्रेजेंट वैल्यू ओनली। जो ये प्रेजेंट वैल्यू बटन कैलकुलेट करता था वही सेम ये भी कैलकुलेट करेगा। सो प्रेस एनपीवी, यू विल सी ऑन योर स्क्रीन आई पूछ रहा है, वो आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट। ओके, पर पीरियड इंटरेस्ट रेट कितना था, दैट वाज 12। तो 12 प्रेस करके एंटर एंड डाउन एरो की, इट विल शो यू एनपीवी। अभी इस पे आप कंप्यूट प्रेस करो, सीपीटी। यस, यू शुड सी द आंसर 199,810। यस, आई होप एवरीबody is getting this. Let's try one more question. A saver deposits following amounts in an account paying a stated annual interest rate of 4% compounded semi-annually. You have to calculate the value the account has at the end of 4 years. So now ये future value calculate करने को बोल रहा है हमको एक तो. Okay, so at the end of 4 years, how much you will have? First, always let's draw a timeline. एंड वी वांट टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। अभी इसमें एक ट्विस्ट है कि जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेमी एनुअल, इट इज नॉट एनुअल। ओके, सो वी हैड लर्न्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि एन, आई बाय वाई एंड पीएमटी तीनों सिंक में होनी चाहिए। सो इफ दिस इज नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये इंटरेस्ट रेट भी मंथली होना चाहिए एंड पेमेंट भी मंथली होना चाहिए। ओके, इफ दिस इज ईयर्स, तो ये दोनों भी ईयर्स। ये अगर 6 मंथली है तो इंटरेस्ट रेट भी 6 मंथली एंड पीएमटी भी 6 मंथली होना चाहिए। बट दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। अभी मेरा जो रेट है वो सेमी एनुअल है, बट जो पेमेंट्स है वो तो एनुअल है। सो हाउ डू वी डू इट? ओके, we will have to divide our periods into semi-annual. तो हम क्या करेंगे? We will take 1, we'll 2, 3, 4, 6, 7 and 8 एंड बीच के पीरियड्स में कैश फ्लो डाल देंगे 0। सो नाउ वी हैव 8 पीरियड्स, 8 सेमी एनुअल पीरियड। इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 2। एंड पीएमटी, या जो पीएमटी इज फॉर अ फिक्स कैश फ्लो, बिकॉज हमारे कैश फ्लो फिक्स नहीं है इसलिए हम पीएमटी फंक्शन नहीं यूज कर रहे, बट हमारे जो कैश फ्लो है वो भी 6 मंथली है। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग इन सिंक एंड नाउ वी कैन यूज द सीएफ फंक्शन। सीएफ फंक्शन में सेम जस्ट लाइक अर्लियर, सीएफ फंक्शन प्रेस करो, इट विल शो यू CF0। CF0 पे मतलब हमारा टाइम 0 पे तो कुछ भी नहीं है, तो 0, एंटर एंड डाउन एरो की। C01 is 0, still enter down arrow key. C02 will be -4,000, enter down arrow key. C03 will be 0 again, enter down arrow key. C04 will be -8,000, enter down arrow key. C05 again 0, down arrow key. C06 will have -7,000, enter down arrow key. C07 will be 0, down arrow key. C08 will have -10,000, enter and down arrow. Now we have inserted all the data. You can press NPV. It will show you I. I is nothing but 2% per period. We have 8 periods and interest rate per period is 2. So 2 डाल के enter press करो and down arrow key press करो. NPV आएगा, उस पे compute press करो and you should get the answer as 25,986. बट वेट, वी आर नॉट डन विद द कैलकुलेशन। हमको पूछा गया था, हमको फ्यूचर वैल्यू पूछा है। हमने कैलकुलेट क्या किया? हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है।
बिकॉज हमारे कैलसी में डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का ऑप्शन नहीं है फॉर अनइवन कैश फ्लोज। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू। अभी मैं इसको 8 पीरियड के लिए कंपाउंड कर सकती हूँ डायरेक्टली। ओके, सो वी कैन टेक प्रेजेंट वैल्यू एज -25,986 n equals to 8 periods. Interest rate per period is 2%. PMT is 0 because हमने सारे cash flows already एक साथ ले लिए. You can compute your future value and you should get is 30,446. So आपके अकाउंट में 30,446 होगा अगर आपने ये अमाउंट्स एवरी ईयर डिपॉजिट किए तो. Yes, I hope you are able to understand this question. Last concept for this series is the cash flow additivity. Cash flow additivity मतलब कि कोई भी कैश फ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो होता है, यू कैन ईदर क्लब इट टुगेदर या यू कैन ब्रेक इट डाउन. सो cash flows at same time period are additive. So let us understand how this can help you solve the questions. A security will make following payments at the end of next 4 years. So 100, 100, 100 and 500. You have to calculate the present value of these cash flows using the discount rate of 10%. So you have 100, 100, 100 and 500. पहले ऐसा लगेगा कि ये अनइवन कैश फ्लोज है, मेरे पीरियड्स 4 है बट 100 तो सिर्फ 3 ही है और एक लास्ट में 500 है. सो आई माइट हैव टू यूज द CF फंक्शन. CF फंक्शन में मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ इसको? CF प्रेस करेंगे, CF0 equals to 0, then C01 equals to 100. F01 फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली एंटर 3 ओवर हियर एंड प्रेस डाउन एरो की. देन C02, अभी ये 3 हो गया ऑलरेडी, कैल्सी को समझ गया. इसके बाद कौन सा कैश फ्लो है वो हमको डालना है. तो 500, F02 में 1, बस हमारा डेटा इंसर्ट हो गया. यू कैन प्रेस NPV. उसके बाद आई पूछेगा, आई में 10 डालो, डाउन एरो की, NPV पे कंप्यूट प्रेस करो and you should get the answer as 590.19. Yes, another way of doing it. Okay, this तो we learned, तो इसमें कैश फ्लो एडिटिविटी क्या था? ओके, अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ये जो 500 दिख रहा है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 100 and 400. सो व्हाट विल हैपन नाउ, यू सी मेरे 4 पीरियड से और 400 से, तो ये तो PMT जैसा बन गया. Any value other than your PMT value at the end of the period is what? Your future cash flow. तो ये future cash flow बन गया. I can calculate the present value using these time value of money functions. So you can take PMT as 100, future value as 400, I equals to 10, n equals to 4, and you can compute present value and you should get the same answer of 590.19. I hope you are able to understand this cash flow additivity concept. This can help you solve the questions faster. So that was all in this series of time value of money. I hope you found these videos useful and you were able to solve the time value of money questions. If you have any doubts, you can drop your questions in the comment section. If you liked our video, please hit the like button and share it with your friends and subscribe to our channel for more such content.